स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12 बिजनेस स्टडीज सिलेबस कंसिस्ट ऑफ 6 चैप्टर्स। तो आने वाली वीडियोस में हम हर एक चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो हमारी चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पे बेस्ड है, जिसके हम टॉप 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमारे नॉर्मल MCQs भी इन्वॉल्व हैं, असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व है और केस बेस्ड MCQs भी इन्वॉल्व। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट MCQ. So first MCQ is, which of the following is not a function of lower level managers? First, preparing daily plans, guiding the workers, training the operatives, coordinating the activities of different departments. तो बच्चों इसका आंसर है D, coordinating the activities of different departments, because this function is performed by top level managers. जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं उनका काम होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना। टॉप लेवल मैनेजर्स में कौन कौन आता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट्स में आते हैं हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी के जो 3 फंक्शंस लाइक प्रिपेयरिंग डेली प्लान्स, गाइडिंग द वर्कफोर्स, ट्रेनिंग द ऑपरेटिव्स, ये सब हमारे लो लेवल मैनेजर्स या फिर फर्स्ट लाइन मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट MCQ, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट। अब यहाँ पे पूछ रहा है कोऑर्डिनेशन कहाँ पे रिक्वायर्ड है। ऑप्शंस आर एट टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट और एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बच्चों इसका आंसर है एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन हर एक लेवल पे रिक्वायर्ड है, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या ऑपरेशनल लेवल हो। हर एक लेवल ऑफ मैनेजर्स को अपनी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है ताकि वो अपने गोल्स को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव कर पाए। नेक्स्ट MCQ इज, a manager applies the existing theoretical knowledge in his own unique manner. In his own unique manner, this reflects that management is. अब इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इस लाइन पे फोकस करना है, own unique manner. अब जब हमने इस चैप्टर में पढ़ा था तो हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था own unique manner. own unique manner को हम बोल सकते हैं पर्सनलाइज्ड वे। क्या बोल सकते हैं? पर्सनलाइज्ड वे, अपने करने का तरीका, दैट इज नोन एज ओन यूनिक मैनर। सो दिस रिफ्लेक्ट्स दैट मैनेजमेंट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल और साइंस एंड आर्ट और परवेसिव। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट, बिकॉज जैसे एक आर्ट को हम अपने पर्सनलाइज्ड वे के तरीके से करते हैं, इसी तरीके से मैनेजमेंट को अप्लाई करने का भी हर किसी का अपना तरीका होता है। देयर इज एन पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। फोर्थ, management can be called an inexact science as it is not a systemized body of knowledge, its principles are not based on experimentation, its experiments are not capable of being accurately predicted or replicated. Fourth is none of these. So we can say that its experiments are not capable of being accurately predicted or replicated. Now इसका explanation ये है, because as we know that management deals with human beings and human behavior is very uncertain. So human behavior cannot be predicted very accurately. Therefore management can be called as inexact science. Fifth MCQ is, among the following whose job is complex and stressful, demanding long hours and commitment to the organization. So top level management, middle level management, lower level management or all of these. So we can say that top level management or top level managers who consist board of directors, CEOs, their job is very complex and stressful because they have to perform a number of major functions like setting goals and policies, coordinating the activities, etc. etc. Now, sixth question is your assertion reasoning type. Let's see. So assertion states that efficiency aims at performing tasks with least wastage of time and effort. Okay. Now next, reason states that efficiency is about doing the job in cost effective manner, getting maximum output with minimum input. So firstly, let's find that is these 2 statements true or false. तो दोबारा रीड करते हैं असर्शन, एफिशिएंसी एम्स एट परफॉर्मिंग टास्क विद लीस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट। बिल्कुल
अगर हमारी टाइम और एफर्ट की जो वेस्टेज है बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगी तो हम कह सकते हैं यस हम एफिशिएंट हैं। साथ साथ एफिशिएंसी ये भी बोलती है डूइंग द जॉब इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है ताकि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले विथ मिनिमम इनपुट्स। तो यस बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड यस वी कैन से दैट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिकॉज जब हमारी कॉस्ट मिनिमाइज होगी, मिनिमम आउटपुट यूज होगा, तभी तो हमारा टाइम और एफर्ट्स मिनिमाइज होंगे। सो यस द ऑप्शन विल बी ए दैट बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू and reason is the correct explanation of assertion. Next is your case based question. Let's read the case study. So Sana is the branch manager of ABC Handicrafts Private Limited. The company's objective is to promote the sales of an Indian handloom and handicraft products. It sells fabrics, furnishing, ready-mades and household items which are made out of the traditional Indian handi fabrics. Sana decides quantities, variety, colors, textures of all above items and then allocates resources for their purchase from different suppliers. She appoints a team of designers and craftspeople in the company who developed some prints for bed covers in bright color on silk. Although the products looked very attractive and impressive, they were relatively expensive on the front of affordability for an average customer. Sana suggested that they should keep the silk bed covers for festive occasions and offer the cotton bed covers on regular basis to keep the cost under control. Now the question comes, she appoints a team of designers and craftspeople in the company who developed some prints for bed covers in bright colors on silk. So which function of management is highlighted here? Tell me. अब क्या किया है सना ने? She has appointed designers and craft people. So appointment of people in the company, appointment of employees, ये कौन से फंक्शन में होता है? Which function of management is highlighted here? This is staffing. Now next question is, in the above case study, the company's objective is to promote the sales of Indian handloom and handicraft products. The above line focus on which feature of management? First, management is an intangible force. Second, management is a goal-oriented process. Third, management is pervasive in nature. Fourth, management is a continuous process. So in this question, देखो company का objective है that company has to promote the sales of both Indian handloom and handicraft product. So this objective can be achieved by putting goals, satisfying goals, achieving goals. So it is a goal-oriented process. Next question is, with reference to the above case, at which level of management Sana is working? So, Sana is working at middle level management. Reason is because Sana is coordinating the activities of different departments. Next question, Sana suggested that they should keep the silk bed covers for festive occasions and offer the cotton bed covers on a regular basis to keep the cost under control. Which function of management is highlighted in the context? Controlling, staffing, organizing, planning. So this is an important question. देखो इसका आंसर होगा कंट्रोलिंग. अंडरस्टैंड दिस केयरफुली. अब यहाँ पे बोल रहा है कि सना ने जब प्रोडक्शन किया तो सना के जो सिल्क बेड कवर्स थे वो काफ़ी एक्सपेंसिव बने और कॉटन बेड कवर्स वर comparatively very cheap. तो सना ने क्या किया? सना suggested that they should keep the silk bed covers for festive occasions and cotton bed covers on a regular basis. तो ये कंट्रोलिंग बता रहा है बिकॉज सना ने एक करेक्टिव एक्शन लिया कि भाई अब क्या करते हैं हम, जो हो गया वो तो हो गया लेकिन उसको ठीक करने के लिए कॉटन बेड कवर्स को रेगुलर यूज कर लेते हैं और जो सिल्क बेड कवर जो थोड़े से एक्सपेंसिव बन गए हैं उन्हें हम फेस्टिव ओकेजन्स के लिए रख लेते हैं. तो इट इज अ पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग. नाउ नेक्स्ट केस स्टडी इज द डब्बावालास ऑफ मुंबई इज द स्टोरी ऑफ 6 Sigma business enterprise. The success of the business lies in the complex yet well coordinated exercise that is carried out on the streets of Mumbai day after day. What is the secret behind the efficiency with which their business is conducted? The story of the Dabbawalas begin in the kitchens of Mumbai. After the step out of the door, someone begins the time-consuming process of preparing the worker a fresh home-cooked lunch.
What happens next for demonstrate the coordination of the dabbawala system? The first dabbawalas pick up the tiffin from home and takes it to the nearest railway station. The second dabbawala sort out the dabbawalas at the railway station according to the destination and puts them in the luggage carriage. The third one travels with the dabbas to the railway station nearest to the destination. The fourth one picks up the dabbawalas from the railway station and drops them off at the offices. By mid-morning, thousands of dabbawalas are bicycling through the streets of Mumbai, ensuring a hot home-cooked lunch for the customer. The whole tiffin distribution requires negligible technology. The dabbawalas rely on low capital and use cycle, wooden carriage and local trains to achieve their targets. The dabbawalas then ensure that the organization earns enough revenues to cover the cost. So what is the secret of success of the business of the dabbawalas as highlighted in the above case? Okay. तो सबसे पहले क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, डिविजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन, कोऑर्डिनेशन एंड ऑल ऑफ द अबव. सो हियर इज द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट है बिकॉज सब लोग हर एक मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ को बहुत ध्यान से परफॉर्म कर रहे हैं. डिवीजन ऑफ वर्क है, हर एक जो डब्बा वाला है अपना अपना काम अपने अपने तरीके से कर रहा है, इक्वली वर्क को डिवाइड कर लिया है. वर्क डिवाइड होने से क्या हो रहा है, हर कोई अपने वर्क में स्पेशलाइज हो गया है. जैसे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन लेके जाना, स्टेशन से लेके ऑफिस तक लेके जाना, एवरी डब्बा वाला इज डूइंग देयर वर्क स्पेशलाइजली. नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन, जब हर कोई काम अपना अपने तरीके से कर रहा है, स्पेशलाइजेशन आ गई है तो सब में कोऑर्डिनेशन भी आ गया. सो वी कैन से ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर. Next, the first dabbawalas pick up the tiffin from home and takes it to the nearest railway station. The second dabbawalas sort out the dabbawalas at the railway station according to the destination and put them into the luggage. The third one travels with the office to the railway station nearest to the destination. The fourth one picks up the dabbawalas from the railway station and drops them at the office. Which characteristics of coordination is highlighted here? So, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स. बिल्कुल यहाँ पे ग्रुप एफर्ट्स हो रहे हैं क्योंकि एक डब्बा वाला, दो डब्बा वाला, तीन डब्बा वाला सारे मिलके एक साथ काम कर रहे हैं. कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन. ऑब्वियसली यूनिटी है एक्शंस में, देन ओनली दे आर एबल टू वर्क टुगेदर. कंटिन्यूस प्रोसेस, दे आर डूइंग द वर्क कंटिन्यूसली. पहले एक कर रहा है, फिर तुरंत बाद दूसरा कर रहा है, फिर थर्ड कर रहा है. सो दे आर डूइंग द वर्क कंटिन्यूसली. सो हियर ऑल्सो वी कैन से ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The dabbawalas rely on a low capital and use cycle, wooden carriage and local trains to achieve the target. The dabbawalas thus ensure that organization earn enough revenue to cover the cost. Which of the following objectives is highlighted above? Enough revenues to cover the cost. ये पढ़ते ही आप लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है. इट इज सर्वाइवल. नेक्स्ट, the story of the dabbawalas begins in the kitchen of Mumbai. After the step of the door, someone begins with the time-consuming process. Time-consuming process. ये पढ़ते ही दिमाग में आ जाना चाहिए. Which function of management they are talking about? They are talking about planning. Time-consuming process is planning. Next question. The success of the business lies in the complex yet well-coordinated exercise that is carried out on the streets of Mumbai day after day. Which feature of management is highlighted above? Complex yet well coordinated activity. So which feature of management? Management is a group activity. Because यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो ग्रुप के तरीके से हो रही है. बिकॉज हर एक डब्बा वाला आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहा है और ग्रुप में काम कर रहा है. सो दिस वॉज द वीडियो एंड दीज वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. तो बच्चों ये जो 15 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा. एक एक क्वेश्चन के कंसेप्ट पे एक एक लाइन, एक एक वर्ड आंसर चेंज कर सकती है. तो बिजनेस स्टडीज़ में एक एक वर्ड पे फोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो ये थी आज की वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन.